أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. So this is the book Al-Musarf Unit 1 and we were discussing verbs. What we have done until now is the introduction, the part 1 Al-Madi, the part 2 Al-Mudari and the part 3 Al-Abwab. So today inshallah we will be moving on to Al-Fi'lul Majhul, the concept of Fi'lul Majhul and the exercise for it. It is a relatively easier concept, so inshallah we can finish that within half an hour, and then the rest half an hour will be the conjugations part where you will be inshallah practicing the conjugations. Keep in mind that conjugating a verb is very important to know the sigha, to know the correct sigha, and by knowing the correct sigha you give the correct translation. If you are confused about the name of sighas or about the conjugations, then you will not be able to give the correct translation. Uh, so let's move on quickly, inshallah, through the introduction, and we'll just summarize everything that we have learned until now. So every fi'l in Arabic has a dhamir attached to it. Either it can be a dhamir that is written or a dhamir that is not written. So either it is a dhamir bariz or a dhamir mustatir. Then we know that there are three persons. First person is ana and nahnu. Second person is anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. And third person is huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. So we have gone through all these details so many times. If you don't know about these details, please watch our previous lessons. Every noun and verb in Arabic has a gender and a number. So a gender can either be muzakkar or muannas. Number can either be wahid, tasniya or jama. You can also say mufrad, musanna or jama. It depends. Then a conjugation is, what is a conjugation? So a verb can be conjugated into different forms to reflect different types of pronouns, like to reflect how many doers are doing that verb, that work, and either they are males or females or mixed up together, either they are wahid or tasniya or jama, either they are mutakallim or they are mukhatab or they are ghaib. So in all the forms, right? So each form of the verb with the pronoun is known as a sigha. Its plural is sigh, and the first person mutakallim does not have a dual. So these are the names of 14 sighas: al-ghaib, al-ghaiban, al-ghaibun, al-ghaibah, al-ghaibatan, al-ghaibat. And then al-mukhatab, al-mukhataban, al-mukhatabun, al-mukhataba, al-mukhatabah, al-mukhatabatan, and al-mukhatabat. And then al-mutakallim and al-mutakallimun. So it makes a total of 14 sighas. These 14 sighas can be seen on your fingers, on your finger parts. So the first finger has three parts. You can allocate the first three parts for al-ghaib, al-ghaiban, al-ghaibun. And then the next finger has the feminines, al-ghaibah, al-ghaibatan, and al-ghaibat. So this is the way how you learn the conjugations, and you memorize them uh, in your minds, so you can give the correct translations. So this is the summary of the introduction. Fail, damir, tasreef, sigha, muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama, ghaib, mukhatab, and mutakallim. Then we moved on to part 1, which was fail mazi. For example, fataha zaydun. So we have a damir mustatir or a damir bariz. For example, if we say fatahtum, so that damir is written there and it is a damir bariz. If you say fataha, then the damir is damir mustatir. It's not written right there. So this has been discussed so many times.
Let's move on to the sigas. Like the first conjugation for fataha, you have to memorize this conjugation and you have to apply many of the root letters to it. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, and fatahna. So this was the end of this lesson. We tried on yab'asu, yaj'alu, sorry, ba'asa, ja'ala, zahaba, and rafa'a. And alhamdulillah, our students are very prepared for the first conjugation. What they need to work on is the second conjugation, which is the fail mudare. So now we move on to part two, which is fail mudare. Fail mudare is one word for three meanings. It can be translated either way, either in present indefinite or in present continuous or in future. Then we learned that understanding the sigha of al-mudare, the al-mudare has four parts in it. The first part is the fail itself, and then the pronoun which is attached to it, which is of course the doer of that fail, okay, fa'il of that fail, and then the third part is harf al-mudare. Harf al-mudare is at the beginning of the fail mudare, and it will always be there. And the fourth one is alamatul i'rab, which will be discussed inshallah in the next lesson. So this noon in the orange color is called noon i'rabi, and the ya at the beginning of the word is in the blue color, which is the hurful mudare or alamatul mudare, right? So the pronouns are is written in this violet color. You can see that wow, which represents the una, like the plural, and fataha is the verb. This is a very important point here. Please remember this point because it's going to have applications in the lessons that are following. In Fail al-Mudari, five sigas have damir mustatir. The siga of al-ghaib, which is yaftahu huwa. So when you say yaftahu, it means huwa yaftahu. And when you say taftahu, it means hiya taftahu. And when you say taftahu, again, it means anta taftahu. And when you say aftahu, it means ana aftahu. And when you say naftahu, it means nahnu naftahu. So these words are hidden inside this word. They are supposed to be hidden inside this word. So then we moved on to the conjugation of fa'al mudare, which is yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, and naftahu. The thing to notice here is that two sigas, taftahu, are the same. Like the siga number 4 is the same as the siga number 7. And then there are three sigas of tasniya which are exactly the same. So taftahani is here on number 5, and then here in the middle, and then here. So number 5, number 8, and number 11 are exactly the same sigas, taftahani. So the number of words you need to memorize are lesser than fa'il madi. Okay, let's move on. This is just a recap. Yab'asu, yaj'alu, yadhhabu, and yarfa'u. Then we moved on to the concept of al-abwab, and we learned that the scale of a verb is fa, ain, and lam. So fa, ain, and lam, for example, za, ha, and ba, they correspond to each other. So the fa kalima is called the faul fa'il, the ain kalima is called the ainul fa'il, and the lam kalima is called the lamul fa'il. So if we have the word fataha, the faul fa'il is fa, the ainul fa'il is ta, and the lamul fa'il is ha. So these terms will be used quite often in every lesson, like maybe 10 or 20 times every time in the lesson. You need to remember that faul fa'il, ainul fa'il, lamul fa'il. Again, fa'ul fa'il is kaf, ainul fa'il is ra, and lamul fa'il is mim. Then we have fa'ul fa'il is seen, ainul fa'il is mim, and lamul fa'il is ain. Okay, so don't confuse fa, ain, and lam with this. So here it is like
fa kalima is the foul fail, that's okay. But here the lam kalima is ain. Lam kalima is ain. Okay, it's not the ain kalima, it's the lam kalima. Okay, so we need to understand it quite in depth. In the fi'l mudare, the same thing applies, but this harful mudare is always one of the four letters. Either it is a ya, or a ta, or a hamza, or a noon. One of these four. One of these four. Because the conjugation of fi'l mudare has these four letters. Always the sigha of fi'l mudare will start with one of these four letters. And then fa kalima, ain kalima, and lam kalima. Same as it was in the fi'l madi. Okay. Then the combination of verbs is all about abwab. So abwab means conjugation, the combination of fi'l madi and fi'l mudare. So there are 9 possible combinations, but only 6 are used in the dictionary. So the first one is fa'ala yaf'alu, like fataha yaftahu. Simple. Both have the fathas on top, right? And then we have fa'ala yaf'ilu, which is daraba yadribu, right? And then we have fa'ala yaf'ulu, which is the nasara yansuru. So you can see in the first one, fataha yaftahu, the ainul fail, which is the letter ta, it has the same harakat in mazi and mudare. In the word daraba yadribu, the ra letter, which is the ain kalima has a fatha in fi'l madi and a kasra in fi'l mudare. And then in nasara yansuru, the ain kalima, which is sad, it has a fatha in fi'l madi and a dhamma in fi'l mudare. So this is the dictionary. We cannot do anything about it. It is according to the usage of Arabs. So Arabs use it like that. And that can be found in the dictionary. Next possibility is that if it is a fa'ila. So if it is fa'ila with a yaf'alu, then it is bab sami'a yasma'u. Again, the opposite harakat. And then if it is a hasiba, like fa'ila yaf'ulu, then it is hasiba yahsibu. So these are the same harakat, right? So here we only have 2. The third possibility is not found in the Arabic dictionary. And then we have fa'ula. Fa'ula has only one combination with yaf'ulu. So if it is a karuma, it has to be a yakrumu. One thing here to remember is that these 3 abwab which have the opposite harakat are called abwab usul. These abwab are called abwab usul, and the others are called abwab furu'. So if there is the same harakat, then these are called abwab furu'. Right? So if the harakat are opposite, then they are called abwab furu'. If the harakat are same, then if the harakat are opposite, they are called abwab usul. If the harakat are same, then they are called abwab furu'. And this will also have some implementations in the future lessons. So if it is a fataha yaftahu, it's very easy and explained so many times. The second possibility is sami'a yasma'u. This was also discussed in detail. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na. And these were the examples. We also gone through the examples. Then we moved on to daraba yadribu. And then we moved on to the examples. And then we moved on to nasara yansuru, which is the most frequently used bab in the Quran. You should practice these verbs most of the time. Because if you have got this one correct, like nasara yansuru, then you have done around like 30-40% of the whole job. So nasara yansuru is very frequent in the Quran. Nasara yansuru. We are going to practice some verbs today, inshallah, conjugating some verbs from nasara yansuru. Okay, the next one is karuma yakrumu. So karuma yakrumu is also used in the Quran, but not so frequently. There are several examples of these karuma yakrumu. Like you can see, the more examples, the more it is used in the Quran. The lesser examples, the less it is used in the Quran. And the last one, which is hasiba yahsibu, is very least
uh, used in the Quran. So it only has two examples here. We can try other examples, but the pattern will be the same. Like yahsibu is just like yazribu, right? Yahsibu is just like yazribu. So if you know yadribu, you know yahsibu as well, right? So it is now, this is it for abwab. So what's the meaning of bab and abwab? What is the fa kalima, the ain kalima, and the lam kalima? This was done, alhamdulillah. Now, today's lesson. Oh, I took 20 minutes. Okay, so now today's lesson is part 4, Al-Majhul. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Part 4, Al-Majhul. Verbs can be divided into two categories according to its voice. Either it is an active voice, this is a verb in which the subject is mentioned, the doer is mentioned. For example, the thief stole the wealth. So the action, the active voice is the original form of the verb. This is called فعل معلوم فاعله. Please write this down. فعل معلوم فاعله. The فعل whose fa'il is known. The fi'l whose fa'il is known. वो फेल जिसका फाइल मालूम हो, जिसका फाइल मालूम हो उसको कहते हैं फेल मारूफ या फेल मालूम. ठीक है, उसको कहते हैं फेल मालूम, जिसका फाइल मालूम हो. Number 2, a passive voice. This is a verb in which the subject is not mentioned and the verb is attributed to the direct object. Yani, the bike was stolen. The motorbike was stolen. So it was stolen. Who stole the bike is not discussed, is not, we are not informed about it in the sentence. Or for example, the glass broke. So who broke the glass? Either the glass didn't break itself, something broke it, but that is not discussed in the fail majhul. The passive voice is called fa'lun majhulun fa'iluhu. Fa'lun majhulun fa'iluhu. Please write this statement. This is very important. Fa'lun majhulun fa'iluhu. यानी वो फेल जिसका फाइल मालूम न हो, मजहूल हो, जिसके बारे में इल्म न हो. A verb whose subject is not mentioned, it is also shortened and called fail majhul. तो इसको शॉर्ट करके कहते हैं fail majhul. So فعل مجهول فاعله. For example, the door opened. So who opened the door? Did the door open itself? No, not, of course not. Either the wind opened the door, right, or someone opened the door, but the door didn't open itself, right? But the thing is that if the glass broke, like for example, it was blown by wind and it broke, right? It fell on the ground and it broke. But in some degree, the glass is also responsible for breaking itself. Why? Because it was not so strong, right? So that is called na'ib fa'il. Inshallah, we will also discuss the concept of na'ib fa'il. Now, coming back again, translating the fa'lun majhul. The passive voice is translated by adding the auxiliary verb to be, was, is being, will be, etc. to the past participle of the main verb. For example, the bike was stolen. So was is the auxiliary verb and stolen was the past tense of the main verb. So the tense is shown in the auxiliary verb, not the main verb, as this remains the same in all tenses. So if it is present tense, for example, we say the thief stole the bike, right? In passive, we say the bike was stolen. In mudare, we say, like the present habitual, we say the thief steals the bike. And in passive, we say the bike is stolen. Or in the present continuous, we say the thief is stealing the bike. Or
For the passive one, we say the bike is being stolen. So is being stolen. Stolen is the third form. And then we get future tense. So the thief will steal the bike for direct active voice. And then the bike will be stolen. So we are predicting the future on a in a passive expression. Like we are saying that the bike will be stolen. So bike will not get stolen by itself. Someone will come and steal it, right? The glass will not break by itself. Someone will come and break the glass. So in these examples, the past participle of the verb to steal, the past participle of the verb to steal, stolen, is used with all the tenses. The auxiliary verb is used in different tenses to show the tense of the main verb. So inshallah it is clear in English. Now how to make the فعل al-madi majhul. Very easy, very simple. Just one step inshallah and you are in. So how to make madi majhul? Now you have understood what is فعل majhul. The فعل majhul can either be madi or it can be mudare. If the concept is not clear, please rewind the video and watch the concept first and then start doing the conjugation, because conjugation is very easy. Easier even than the abwab. Okay, easier. But understanding fail majhul is that how the how we can express a fail majhul. So the passive of al-madi is formed by number one, leaving the harakat of the last letter as it is. So lam will be left as it is. Lam al-fail will be left. Then number two, giving the penultimate letter a kasra. The middle letter or ainul fail will be given a kasra, and giving the remaining letters a dhamma. So baki jo letters bach jaye, the remaining letters will be given a dhamma. Al-fail al-majhul is formed in the same way for all the abwab. So whichever bab it is, the fail al-majhul will be formed in the same way. So this solves the problem. Now fataha will be changed here. Fataha will be changed to futiha. Sami'a will be changed to sumi'a. Daraba will be changed to duriba, and nasara will be changed to nusira. So what difference it makes in the meaning? So for example, if I say nasara, like fataha, fataha zaidun, zaid opened something like the bab, right? So we say fataha, he opened. If we say fataha, it means he opened. And if we say futiha, it means that he was opened or it was opened. When we say sami'a, it means he listened. And if we say sumi'a, it means he was listened to. He was listened to. Usko suna gaya. Usko suna gaya. If we say daraba, means he hitted or he did hit, right? So I am saying hitted because it's past tense. I have to express it that it's past tense. And then if we say duriba, it means he was hitted, right? Usko mara gaya. Duriba, usko mara gaya. He was hitted. And when we say nasara, means he helped. Usne madad ki. Ne, usne madad ki. And if we say nusira, it means he was helped. Uski madad ki gayi. Uski madad ki gayi. So translating the fail majhul is that you will always put a maf'ul there, not a fa'il. उसने मदद की नहीं बल्कि उसकी मदद की गई. अब ये कैसे होगा, ये इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि किस लफ्ज के क्या मायने निकलेंगे. Moving on to page 44, conjugation of Madi Majhul. So, this is easy. Below is the conjugation of Majhul from the verb
फतहा यफ्तहु। देखिए इसको जरा गौर से। सो फतहा का द मजहूल फॉर फतहा वुड बी फुतिहा। फुतिहा means it was opened. Futiha, they both were opened. Futihu, they all were opened. Right? They did not open, but they were opened. Right? And then Futihat, she was opened. And then Futihata, they both were opened. And then Futihna, they all females were opened. So it's not necessarily a female like a lady. It can be any feminine noun. I'm not going into the example to make it less complicated. And then when we say Futihta, so it's you. You, anta Futihta. You were opened. Futihtuma, like you were opened for a surgery. You were opened for a surgery, right? Okay. Futihtuma. So you were opened. You both were opened. Futihtum, you all were opened. Futihti, you were opened again for a feminine. Futihtuma, you both were opened. And futihtunna, you all were opened if we are talking to ladies. Futihtu, I was opened. Futihna, we were opened. So if you just analyze this one sentence, I was opened or we were opened or it was opened, it gives you an evident meaning which is very simple. So this is number 40 page moving to page 45 exercise 1. G. So let's see who is with us today inshallah for conjugations. MashaAllah. So sister Zainab Ali. क्या मैं अकेली हूँ मौलाना आज? जी जनाब। अरे रे रे, कोई बात नहीं, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आपको ज्यादा चांस मिलेगा। मगर मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है मौलाना, जरा प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो। देखें ये तो रोट मेमोराइजेशन की तरह है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर गलतियां होती हैं तो ये सबसे होती हैं, सिर्फ आपसे नहीं होती। ठीक है, गलतियां सब करते हैं और ये जो तसरीफ का काम है इसमें आम साम गलतियां होती हैं, बड़े बड़े उलमा से भी गलती हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह परवरदिगार आपको हिम्मत दे। आप रुफिआ कर सकती हैं, ये फेल माजी है, मुजारे नहीं है, आसान है। रुफिआ। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुफिआ रुफिआ रुफिउ रुफिअत रुफिता रुफिना जी रुफिता रुफितुमा रुफितुम रुफिती रुफितुमा रुफितुन्ना रुफितु रुफिना। अहसानती, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार में आपने कर लिया और आप इतना डर रही हैं इसके अंदर। चलें अब नेक्स्ट पे आइए। ये जितने ज्यादा होते जाएंगे उतना आपका जो है इसके ऊपर ग्रिप पक्की होती जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा, रुफिआ के मायने क्या होंगे, आप समझा सकती हैं रुफिआ के क्या मायने होंगे? देखिए रे फे और आइन जो है ये ऊंचा करने के मायने में आता है, राइट। जैसे वह रफाना लक जिक्रक, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया, राइट। अब इसके अंदर रफा अगर होता, देखें आपको जरा सा हम समझा दें यहाँ, ताकि पहला पहला जो लफ्ज है वो आप अच्छे से समझ लें ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए। तो रफा के मायने होते हैं उसने ऊंचा किया। इसके रफा के माने, अच्छा मैं जरा लिख भी ले रही हूँ रफा रफा यानी उसने ऊंचा किया, ही एलिवेटेड, ही एलिवेटेड। उसने आ के मायने क्या बनेंगे? उसने ऊंचा किया है, रफा के माने। हाँ, अब रुफिआ के क्या मतलब? रुफिआ का मतलब है होगा कि वो एक आदमी ने ऊंचा किया। He was elevated. He was elevated. अच्छा,
यानी उसको ऊंचा किया गया। मेरी राइटिंग माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज, मैं उंगली से लिख, ऊंचा किया गया। ऊंचा किया गया, मैं उर्दू में लिख ले रही हूँ, उसको ऊंचा किया गया। जी। और जो रफा था उसके मायने थे उसने ऊंचा किया। ऊंचा उर्दू किया, उसने उसने ऊंचा किया। में ऊंचा किया, हम्म, यानी जो ब्लू वाला है, यानी जो फेल मारूफ है, उस उसमें फाइल का जिक्र किया गया है। और जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी पहले मजहूल है, उसमें ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया, किसने ऊंचा किया वो नहीं बताया गया, बल्कि किसको ऊंचा किया गया वो बताया गया। अच्छा अच्छा। ये बात क्लियर हो गई इंशाल्लाह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस मसला आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर हाथ से लिखती हैं तो वो मैं तो ले सबसे ली, अच्छा। जी। ले ली मैं स्क्रीनशॉट। से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो तो सबसे बेहतर है। क्योंकि जब बंदा नोट्स बनाता है तो उसकी जो एनहांस्ड मेमोरी होती है, उसकी मेमोरी जो है एक्सटेंड कर जाती है उसकी नोटबुक तक। ठीक है ना? अब वो अच्छा, नोटबुक खोलता है, उसको सब याद आने लगता है कि मैंने क्या लिखा था। एक क्वेश्चन है। रुफे, हम्म, रुफेआ यानी उसको ऊंचा किया गया, जी। तो कौन ऊंचा किया गया वो तो लिखा नहीं, वो तो इसीलिए तो ये फेल मजहूल है। फेल हम्म, मजहूल यानी फेलुन मजहूलुन फाइलुहु। उसका फेल मजहूल, उसका फाइल मजहूल है, यानी उसके फाइल का मालूम नहीं है किसने किया, या कैसे किया, या कब किया, या क्यों किया, कुछ भी नहीं पता। ये पता है कि भाई गिलास टूट गया, दरवाजा बंद हो गया है, चाबी गुम हो गई। अब चाबी से खुद को तो गुम नहीं किया है ना, चाबी गुम हो गई भाई। चाबी ऐसे कैसे खुद ही गुम हो गई? नहीं, किसी ने तो किया होगा ना उसको गुम। लेकिन उसका जिक्र नहीं है क्योंकि शायद वो मालूम नहीं हो, या शायद उसका जिक्र करना उस वक्त मुनासिब ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें फाइल का जिक्र नहीं है जी, रुफेआ में। वर्ड में जो है, जो रुफिया अच्छा है, इसमें फाइल का जिक्र नहीं है बल्कि मफऊल का जिक्र है, जिस पर काम हुआ है उसका जिक्र है। अच्छा अच्छा। जी। हो गया क्या अच्छा। क्लियर? जी समझ में आया, जी हाँ। चले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको भी हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। एक लफ्ज है अलिमा, पहले इसको देखते हैं। अलिमा, अलिमा। अलिमा के मायने हैं वो जानता था। वो लिखना चाहे तो लिखिए प्लीज, जी जानता मैं लिख रही हूँ, वो जानता था। था, यानी ही न्यू, ही न्यू। राइट। अब इसमें फाइल का जिक्र मौजूद है। जानता था, कौन जानता था? वो जानता था। वो कौन था? वो एक मर्द था। ही न्यू। लेकिन जब हम कहें उलेमा, तो उलेमा में फ़अलुन मजहूलुन फ़ाइलुहु, उसका फाइल जो है मजहूल है। लेकिन किसके बारे में पता है? जो जिस पर काम हुआ है उसके बारे में मालूम है। वो जाना गया, वो जाना गया, या उसके बारे में इल्म हुआ। अगर इसको आप जरा फैला के लिखना चाहें, उसके बारे में इल्म हुआ। राइट। वो जाना गया ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, मजीद इसको कॉम्प्लिकेट तो इल्म नहीं होगा। हुआ। जी। वो जाना गया। ही वॉज नोन, ही वॉज नोन, ही वॉज नोन टू बी a pilot, he was known to be a scholar, he was known to be anything. He knew और he was known। देखें, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया was, और थर्ड फॉर्म आ गई known। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। मैं ले ली स्क्रीनशॉट इसका। तो तो माशाल्लाह, लिख चलें रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। जुलिमा। अब एक लफ्ज है ज़लमा। ज़लमा जो लफ्ज है वो है फ़अलुन मअरूफुन फ़ाइलुहु। उसका उसका फाइल जो है मारूफ है, कि फाइल का पता है कौन है उसका फाइल। वो, यानी उसने जुल्म जुल्म किया। किया। अहसन थे, उसने जुल्म किया।
जुल्म को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जुल्म को इंग्लिश में अरे ना क्या बोलते हैं कि जुल्म को? तो ऑपरेस्ड। Oh, okay. He oppressed somebody. Whatever. जी, ही ऑपरेस्ड। और अगर लफ्ज हो जुल्मा तो फिर क्या ट्रांसलेशन होगा? जुलेमा का होगा he was oppressed. जी, उस पर जुलेमा जुल्म किया गया। यानी उस पर जुल्म किया गया। उस पर उस पर जुल्म किया गया, जुल्मा यानी उस पर जुल्म किया गया, यानी वो मफूल बन गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर आप देखें तो वॉज जो है फॉर्म टू बी है, और ऑपरेस्ट जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही वॉज ऑपरेस्ड। इसका ही, भी मैं लिख ली और स्क्रीनशॉट बहुत भी ले ली। माशाल्लाह, वेरी गुड। लास्ट है ओबेदा। एक लफ्ज है अबादा। अबादा यानी उसने इबादत की। अब यानी इबादत की। ही वर्शिप्ड। उसने इबादत की, यानी वो फाइल था इबादत का। इबादत का फ़ैल उसने अंजाम दिया। और अगर ये लफ्ज उबेदा हो तो इसके क्या मायने बन जाएंगे, बताइए? उबेदा उबेदा यानी ये हो जाएगा कि जी बताइए। अबदा तो ही वर्शिप्ड हुआ, तो ही जी वॉज वर्शिप्ड। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ही वॉज वर्शिप्ड। वर्शिप्ड में डबल पी आता है या सिंगल पी आता है? नहीं डबल पे आता, मगर ये समझ में नहीं आ रहा ही वॉज वर्शिप्ड का उर्दू में कैसा बोलेंगे आप? फिरौन वॉज वर्शिप्ड। उबेदा फिरौन। फिरौन। फिरौन वॉज वर्शिप्ड एज अ गॉड। ओह अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया। ही उसकी वॉज इबादत वर्शिप्ड। गई। ही वॉज वर्शिप्ड। उसकी तो ये इबादत वॉज की गई, उसकी इबादत की गई। की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती यानी इस हूँ। सूरत में वो मफऊल बन गया, काबिल इबादत। जिसकी इबादत की गई कौन था? फिरौन था, राइट। उसकी जी इबादत। आजकल दुनिया में पैसे की इबादत की जा रही, राइट। जैसे हम कहते हैं ताकत की इबादत है। हाँ। तो ये इस तरह इस्तेमाल होता है। बहरहाल, अब हम चलते हैं इसके कॉन्जुगेशंस की तरफ, जो और कि ये आप हमें। हुआ फेले फेले मजहूल। जी, फेल माजी मजहूल। फेल माजी मजहूल, क्योंकि ये सारे माजी हैं, राइट। अच्छा ये फेल सारे माजी मजहूल, अच्छा अच्छा। माजी मजहूल। इसके बाद जो सेकंड चीज आने वाली है वो है मुजारे मजहूल, राइट। उसको हम्म। बनाना भी बिल्कुल इसी तरह आसान है, और उसमें मीनिंग जो है वो वॉज नहीं होगा बल्कि विल भी होगा। चले, अब आप बताइए। रुफिआ। रुफिआ की गर्दान कहिए। रुफया रुफया रुफ 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 रुफे उ अ, माजी बोल रहे हैं आप इसका? ये माजी ही है जो आप कह रही हैं। हाँ जी, अच्छा रुफेअत रुफेता रुफेना रुफ रु- रुफ रुफेता रुफेतुमा रुफेतुम रुफाती तो रुफेतुमा फिर रुफेतुन्ना ये कसरा जो है, रुफेतु ये रुफेना। ठीक है। हाँ जी। हम्म। ये जेर जो है ये पूरे गर्दान में जेर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। अच्छा तो फिर ठीक है। से पढ़ूं। नहीं रुफे बस ठीक है। अच्छा। उलेमा का बताइए, उलेमा। सेकंड वाला, उलेमा। उलेमा उलेमा उलेमू उलेमत उले उले उलेमता
उले उलेमना उलेमिना उलिमना उलिमना उलिमता उलिमतुमा उलिमतुम उलिमती उलिमतुमा उलिमतुन्ना उलिमतु उलिमना। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब बताइए जुलेमा। जुलेमा जुलेमा जुलेमू जुलिम जुलिम जुलिमत जुलिम जुलिम जुलिमता जुलिम जुलिमना जुलिमता जुलिमतुमा जुलिमतुम जुलिमती जुलिमतुमा जुलिमतुन्ना जुलिमतु जुलिमना। माशाल्लाह, वेरी गुड। उबेदा। उबेदा उबेदा उबेदू उबेदत उबे उबेदत उबई उबीद उबीदता नहीं उबी नहीं, चेंज उबी ना करें। उबीदा उबे। उबी उबी उबेदा। उबीदता उबीदना उबी उबीदता उबीदतुमा उबीदतुम उबीदती उबीदतुमा उबीदतुन्ना उबीदतु उबीदना। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब देखें, ये जितने भी अल्फाज हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो क्या है? अलमाजी मजहूल है। देखें, हेडिंग पे हमेशा लिखा हुआ है अलमाजी मजहूल। अलमाजी मजहूल। ये भी अलमाजी मजहूल है सारे, ठीक है। अब हम चलते हैं मुजारे मजहूल की तरफ, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी होगी, आप उसको करके रखिएगा इंशाल्लाह। ये रिटर्न में मुझे चाहिए, ठीक है। जब कौन भी सा? आप, ये तुरिक ना का? जी हाँ, पेज नंबर अच्छा 46 की एक्सरसाइज है। आप इसको लिख लीजिए, पेज 46। या अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायरेक्ट। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे पूरे पेजेस प्रिंट नहीं हो रहे हैं तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही। प्रॉब्लम, आप मैं इसको यूं कर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पेज पेज जी पेज नंबर 46। दिखाऊं आपको? 46। यहाँ मैं लिख ली पेज नंबर 46 जी। तुरिक ओके। ना। अच्छा, तो इसको बनाना है। ट्रांसलेट द वर्ब शोन। ट्रांसलेट का तो नहीं आता मौलाना मुझे अभी। नहीं, ट्रांसलेट तो आप बताएंगे ना। तुरिक ना कौन सा सीगा है? सीगा नंबर 6 है। नून फतहा ना है इसके आखिर में, राइट। तो सीगा नंबर 6 का अच्छा अच्छा। ट्रांसलेशन आप क्या कहते हैं? दे दोज लेडीज लेफ्ट। तुरिक ना, दोज लेडीज लेफ्ट समथिंग, लेफ्ट डूइंग समथिंग, स्टॉप्ड डूइंग समथिंग, राइट। ऐसे हाँ करके हाँ। आपको तर्जुमे करने हैं। अच्छा, वैसा करके भिजाऊं मैं आप? जी, बल्कि ऐसा करते अच्छा हैं ना, अभी इस वक्त हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह। 10 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह आपको ये करवा ही देते हैं ना एक साथ, अच्छा, ठीक है। एक चीज मेरे को समझा दीजिए प्लीज, आगे बढ़ने से पहले। मैं ये बताइए। जो पेज नंबर 17 पे कॉन्जुगेशंस हैं, वो सेगा, क्योंकि मैं कोई और नहीं है इसलिए मैं जरा टाइम ले सकती हूँ। अल गायबू अल गायबानी अल गायबूना, ये जो लिखे हुए हैं सेगे, जी ये ये अरबी के लिए लिखे हुए हैं, अरबी में है बोल के। जी हाँ, अरबी में भी ये इसी तरह बोलते हैं और उर्दू में भी इसी तरह बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गायब, ठीक है, समझ गायबान, गई जी, समझ गायबून, गई। गायबा, गायबतान, गायबात, हम्म। अच्छा ठीक है, समझ गई मौलाना। ठीक ठीक। है। चले माशाल्लाह। हम्म। ये है पेज 46। अब इसके बाद जो है मुजारे मजहूल है। मैं नहीं चाहता मैं आपको उसके अंदर इस वक्त जो है तंग करूं, क्योंकि अभी आपका मुजारे मारूफ जो है वो भी बहुत ज्यादा पक्का नहीं हुआ है, ठीक है। जी हाँ, तो बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बहुत बिहाइंड हो गई जरा। हाँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसको कैचअप कर सकती हैं अगर आप पहले मुजारे वाला जो लेसन है उसको दोबारा देखिए और उसके प्रैक्टिस मुझे भेजिए प्लीज, ठीक है। लिख के भिजाऊं क्या आपको, बोल के भिजाऊं? लिखने के बर्डन में मैं नहीं डालना चाहता आपको। अगर आप लिखना चाहें तो दैट्स बेटर, लेकिन अगर आप सिर्फ बोल देना सही से सीधे तो ये भी काफी हो जाता है, ठीक है। ये इल्म पहले अच्छा, लिख के नहीं सीखा और मैं जाता था, पहले फ्राइडे की बोल। क्लास मिस कर दी, तो फ्राइडे की क्लास इसमें आ गई ना? आज आज तो आ गई है फ्राइडे की क्लास। जी जी ठीक है। तो जी जी। लिखना। अच्छा, ये तो मैं आपको करके बताऊं क्या, अभी बोलना है? मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी लफ्ज आपके सामने आए तो आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। देखें, ये लफ्ज आपके सामने आया तो आपने इसको देखा, तो आपने देखा कि इस पे पेश है, ठीक है। तो ये फेल जी मजहूल है, क्योंकि फेल मजहूल पेश से शुरू होता है।
फिर आपने देखा कि इसके आखिर में न है, राइट? तो न जी वाला सीगा नंबर 6 होता है। तुरिकता तुरिकतुमा, नहीं, तुरिका तुरिका तुरिकू तुरिकत तुरिकता तुरिकना, सीगा नंबर 6। सीगा नंबर 6 किसके लिए होता है? सीगा नंबर 6 होता है जमा मुअन्नस गायब के लिए, जमा मुअन्नस गायब के लिए। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे दोज विमेन, या दोज लेडीज, या सिर्फ दोज थिंग्स, क्योंकि ये थिंग्स के बारे में भी बोला जा सकता है ना। ठीक है, तो लेडीज को जो है हम ब्रैकेट में कर देते हैं, दोज। अब तुरिकना यानी वर लेफ्ट, दोज लेडीज वर लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया, लेफ्ट समवेयर लाइक लेफ्ट बिहाइंड, और लेफ्ट फ्रॉम द सीक्वेंस, और लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, राइट? तो इसका इसका तर्जुमा इस तरह होगा, दोज लेडीज वर लेफ्ट, दोज लेडीज वर लेफ्ट। वर क्यों? क्योंकि फेल माजी है। दोज क्यों? क्योंकि ये नून जो आखिर में है ये जमा मुअन्नस का नून है। ठीक है, और जी। इसको हमने मजहूल में क्यों ट्रांसलेट किया? क्योंकि ऊपर इसके दम्मा है, पहला दम्मा है। ठीक है, तो शुरू करें, अरे चले मैं वो आगे। स्क्रीनशॉट ले लेने का था। अच्छा रुके, मैं अभी आता हूँ वापस। ए, इंशाल्लाह ये ये हो गया जी। एक सेकंड, इसको और परफेक्ट करते हैं, लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लिख भी ले रही हूँ मगर फिर भी मेरे को जरा अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगी तो आपको ये ले ली, मेमोरी में मैं ले रहेगी। ली। जी ले ओके, ली। नेक्स्ट पे आते हैं इंशाल्लाह। ये मैं सारा आपको इंशाल्लाह सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको मुश्किल का सामना ना हो। खुशरू, खुशरू को सिर्फ फोकस करें हम, खुशरू। अब हमें ये पता है, अब इस लफ्ज के अंदर आपको क्या क्या पता है, आप भी जरा बताइए। हुशेरू हु ये हे के ऊपर जो दम्मा है उससे जी, ये जाहिर हो रहा है कि ये मजहूल है। मजहूल है। हम्म, मजहूल, और ये लिख भी लेना चाहिए मजहूल। और ये हुशेरू, जी, हु- वाव अलिफ किस चीज हुशेर से अलामत होती है? जी, वाव, अच्छा, हुशे हुशेरू, हुशेरू। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये जमा मुजक्कर की अलामत होती है, जमा मुजक्कर, यानी दोज मेन। क्या ट्रांसलेट करेंगे इसको हम? दोज मेन। मेन को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेन और वेमेन साथ में भी हों तो होशेरू का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हम सिर्फ इसको ट्रांसलेट करते हैं दोज मेन वर। वर क्यों लाए हम? क्योंकि ये प्लोरल है, और ये पास्ट है, राइट? दोज मेन वर। अब हा शीन और रा के क्या माने हैं? गैदर। तो हम इसको लिखेंगे गैदर्ड, दोज मेन वर गैदर्ड। जमा मुजक्कर गायब, गायब लिखना भूल गया मैं, जमा मुजक्कर गायब यानी दोज मेन वर गैदर्ड। इसका भी वो ले ली मौलाना। जी, हो गया। कारी, चलो जी। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नुसेरा, नुसेरा। अब इसमें नुसेरा, नुसेरा में दम्मा है तो मजहूल है ये। नु से रा, नुसेरा। मादी, तो ये भी वो है जमा, जमा जी मुजक्कर, जी, मुजक्कर भी हो सकता, मुअन्नस भी हो सकता शायद ना। जमा तो नहीं, ये तो तस्निया नुसे, है ना, अलिफ आ रहा है आखिर में, तस्निया हाँ, फेल माजी, मुजक्कर, तस्निया, मुजक्कर मुजक्कर गायब, गायब। राइट? तो हम इसको जी ट्रांसलेट करेंगे बोथ दे बोथ वर। वर इसलिए करेंगे क्योंकि फेल माजी है और जमा है, और मुजक्कर और गायब है, यानी नुसेरा, दे बोथ वर हेल्प्ड,
HELPED, ED क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस है। दे बोथ वर गायब। हेल्प। अगर ये नसरा होता तो हम कहते दे बोथ हेल्प्ड, यानी उन्होंने मदद की। अब यहाँ पे नुसेरा है तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे दे बोथ वर हेल्प्ड, उन दोनों की मदद की गई, उन दोनों की मदद की गई। उर्दू में तो नहीं लिखूं? नहीं नहीं, आप उर्दू में लिखिए, मैं उर्दू में लिख रही हूँ मौला। दे बोथ वर हेल्प्ड, उन दोनों की मदद की गई। अच्छा जनाब, आगे तस्निया, बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, नुसेरा तस्निया जमा, तस्निया यानी टू, पहले टू, माजी, मजहूल, तस्निया मुज़क्कर और मुजक्कर, गायब। जी। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं जरा जल्दी से। अब थोड़ा सा टाइम अपने पास कम है तो हम थोड़ा सा तेजी में निकलेंगे, ठीक है? अब जी, दोबारा इसमें सही पोजीशन है। ये ये ताज मजहूल है। मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस गायब, ये फेल माजी। इसको सुनते ये जाइए और रहेगा लिखते साथ। फेल माजी, जी। फेल माजी, मुअन्नस मजहूल, मजहूल, फेल माजी मजहूल, और वाहिद फिर वाहिद मुअन्नस मुअन्नस गायब। गायब। सीगे का नाम इस तरह लिखते हैं, फेल अच्छा, माजी मजहूल वाहिद मुअन्नस गायब। क्योंकि जब मुअन्नस कोई गायब। लफ्ज़ सामने आता है तो उसके बारे में पहला सवाल ये होता है कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। तो हमने कहा ये फेल है। जब ये डिसाइड हो गया कि ये क्या है, फेल है, तो फिर दूसरा सवाल आता है कि कौन सा फेल है, माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, कौन सा फेल है। हमने कहा ये माजी है। अब अगर माजी है तो ये माजी मारूफ है या माजी मजहूल है। हमने कहा ये मजहूल है। कैसे पता चला? इस दम्मा से पता चला। फिर अगर ये माजी फेल माजी है तो ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है। हमने कहा ये वाहिद है। तो कहा कि अगर वाहिद है तो मुजक्कर है या मुअन्नस है। हमने कहा कि मुअन्नस है। तो अगर ये वाहिद मुअन्नस है तो ये हाजिर है, गायब है या मुतकल्लिम है। हमने कहा ये गायब है। अगर ये हम्म बात समझ में आ गई तो इल्म सर्फ समझ में आ गया। अच्छा जनाब, अब कुज़िबत, कुज़िबत यानी मुअन्नस गायब जो होती है वो होती है शी। माजी है तो हम लिखेंगे वाज। अब शी वाज, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वो झुटलाई गई। शी वाज, शी वॉज बीइंग लाइड। शी वाज बी लाइट नहीं लिखेंगे, बी लाइट या बीइंग लाइट। बीइंग लाइड। चले मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। शी वाज मैं बीइंग, इसकी भी, आप उर्दू में लिख दे, बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके। उस औरत को झुटलाया गया, उस औरत को झुटलाया गया। जिस तरह रसूल की बेटी को दरबार में झुटलाया गया तो हम कहेंगे खुज़िबत, झुटलाट, खुज़िबत। माना झुटलाया, और वो नुक्ते नीचे आना था, आप ऊपर लिख दिए झुटलाट। ओ सॉरी 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 सॉरी। जब ज्यादा जबानें बोलते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है। झुटलाया गया, थैंक यू आपने बताया। उस औरत को झुटलाया गया, खुज़िबत यानी उस औरत को झुटलाया गया। क्लियर हो गया इंशाल्लाह? इसका लीजिए शॉर्ट जी ऑफ, हाँ। हाँ आगे बढ़े। चलें, अब नंबर 5 आया, गुफेरा। दोबारा वही चीज अप्लाई गुफेरा, हो, गुफेरा। गुफेरा का भी यही है कि वो मजहूल है, और बताएं कि इसम है, फेल है या हर्फ है? गुफेरा, ये आप क्या फेल है, पूछ रहे हैं? फेल माजी, अ, उम, फेल माजी अ, मजहूल, मजहूल, अ, वाहिद, मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर और गायब। जी, गुफेरा यानी ही। वाहिद मुजक्कर गायब कौन होता है? ही होता है। ही वॉज
क्या किया है इसको? forgiven. he was forgiven. he was forgiven. फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब. he गायब, was forgiven. इसको माफ कर दिया गया. जी. अगर ये लफ्ज होता गफरा तो हम कहते उसने माफ कर दिया. अब ये लफ्ज है गुफेरा, यानी उसको माफ कर दिया गया. he was forgiven. लिख लिया आपने? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट भी ले रही थी इसकी. जी थोड़ा सा हम तेजी में चलेंगे क्योंकि हमारा टाइम बस एंड हो गया. जी हाँ, ठीक है हम मौलाना, एंड हो गया तो कोई बात. लोग करते हैं. टाइम तो एंड ही हो गया बिल्कुल. जुरिब तुम. अब मैं खुद ही करूंगा इंशाल्लाह इसको. आप इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए. जुरिब तुम यानी क्या है? ये है फेल माजी मजहूल जमा मुजक्कर आजर. हमने आपको बताया था तुम के माने होते हैं तुम, यानी यू, ऑल. ऑल ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है? ऑल के माने कुल नहीं होता. यू ही लिख देते हैं. चलें, यू वर बीइंग हिट. वैसे इसका सही तर्जुमा होना चाहिए यू वर हिटेड. लेकिन हिटेड जो है वो इंग्लिश में सही नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं यू वर बीइंग हिट. राइट? यू वर हिटेड जी या यू वर बीइंग हिट. अब हिटेड जो है इंग्लिश में सही नहीं है, इस वजह से हम इसको जो है इसकी जगह हम लिखते हैं बीइंग हिट. BEING बीइंग हिट. ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से. फेल माजी मजहूल जमा जी मुजक्कर. अब नेक्स्ट पे आइए. नेक्स्ट है हमारा नंबर 7. जुल्म तुन्ना. तुन्ना, यू ऑल लेडीज. तुन्ना, यू ऑल लेडीज. इसको तो हम बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं. यू ऑल लेडीज वर oppressed. प्लीज डोंट माइंड द राइटिंग. फेल माजी मजहूल फिल माजी मजहूल, मोन जमा मोअन्नस, हाजिर. हाजिर. फेल माजी मजहूल जमा मुन्नस हाजिर. हाजिर. जुल्म तुम. तुम सब पर जुल्म किया गया. सब पर जुल्म किया गया. तुम सब पर जुल्म किया गया. जुल्म तुन्ना. अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका? मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ जी, हो गया. जी हाँ. चल आगे बढ़ते हैं. औरिफ्ता. औरिफ्ता. ता क्या होता है? यू. यू सिंगुलर मेल. ठीक है, यू. जी मैन वर recognized. recognized या नोन. नोन नहीं कहेंगे क्योंकि नॉलेज का ताल्लुक इल्म से होता है और रिकग्निशन का ताल्लुक मारिफत से होता है. तो ये क्या है? सीगा फेल माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर हाजिर. फेल माजी फिल मजहूल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर वाहिद हाजिर. आप इसका मुज़क्कर शॉट ले लीजिए. हाजिर. फेल ये माजी ले मजहूल ली. वाहिद मुजक्कर वाहिद हाजिर. मुज़क्कर हाजिर. यू वर रिकग्नाइज्ड. तुम पहचान लिए गए. तुम पहचान लिए गए. तुम्हारी मारिफत हो गई. राइट, तुम पहचान लिए गए. अच्छा जनाब, होमिल. होमिलता. 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 होमिलता जो है ये है होमिला. होमिला. होमिलू. होमिलत. होमिलता. यानी सीगा नंबर 5. सीगा नंबर 5 क्या है? फेल माजी मारू फिर फिल फेल माजी माजी, मजहूल फिल मारूफ, तस्निया मुअन्नस तस्नीया मुअन्नस, गायब. हुमिलता. those two women. both those women या those two women were
अब हा मीम और लाम तो लिफ्ट के मायने में होते हैं, लिफ्टेड, लिफ्टेड, लिफ्टेड अप, राइट। सो हुमिलता फेल माजी मजहूल तस्निया मोनस गायब, दोज टू वुमेन वर लिफ्टेड, उन दोनों चीजों को, चीजों के बारे में भी ये इस्तेमाल हो सकता है ना, कोई चीज फेमिनिन जी नाउन हो उसके बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है कि दोज थिंग्स वर